Hello, my dear students of class 10th. So you can see on the screen, very boldly it is written that we are going to discuss some very important MCQs from the first chapter of physics, force. You have a very few days left for your first semester board examination. You know that the questions will be MCQ based. So I have with you today to share some very important MCQ questions, and I'm very sure that these questions will be very, very beneficial to all of you. So come on, get ready with your notebook, and you have to solve all of these questions along with me. I will explain each and every question also as I will proceed. Okay, so let's get started. So here is the first question. Which of the following conditions will produce rotational motion in a body? Now, very beginning of the chapter, you're introduced with rotational motion and translational motion. You know that when a body is moving in translational motion, the body must be free to move. So the first option, which says the force is applied on a stationary body which is free to move, is not the option, because it is when the body has to produce translational motion. Okay, so only when the body is pivoted at a point. Pivoted means if you fix the body to a particular point, fix it, and this point is known as a pivot, and you apply the force at a suitable point, this body will now rotate. So it will produce rotational motion. So the second option, force is applied on the body which is pivoted at a point. The body is pivoted. So this option is the answer. The third option, force is not applied on a body. This is impossible. How can you produce motion in a body if there is no force applied? And none of the above is also wrong. So this is the correct. The second one is the correct option. Moving to the second question. Which of the following is not a factor affecting the turning effect of a body? इनमें से कौन सा ऑप्शन फैक्टर नहीं है? It is not a factor. किसका फैक्टर नहीं है? Turning effect of a body. Turning effect of a body means the amount of torque, the amount of rotational effect produced in a body. किन पे depend नहीं करता है. We know the formula for measuring the turning effect, or what you call it, moment of force. Moment of force को ही बोलते हैं torque. Moment of force, yani this is that physical quantity which measures the amount of turning effect done. उसका formula क्या होता है? Force into perpendicular distance from the pivot and the force. So force is one of the factors responsible, and the perpendicular distance is responsible. So force applied on a body is a factor. So this is not an option. हमें उसको select करना है which is not a factor. और ये perpendicular distance between pivot and force भी factor है. So this cannot be the answer. So mass of the body is not a factor. Hence this is the answer. Option A, I mean the first option, is the answer to this question. Okay, moving to the next question. Which of the following is not a unit of moment of force? इनमें से कौन सा unit of moment of force नहीं है? Moment of force का formula मैंने अभी लिखा था. Moment of force is equal to force into distance, force into perpendicular distance. Okay, so force का unit होता है Newton, और डिस्टेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर. यानी न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट है. यू हैव आल्सो स्टडीड दिस वेरी क्लियरली रिटन इन योर बुक आल्सो. द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर. बट देन हियर यू हैव सर्टेन ऑप्शंस. दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट. ओके, न्यूटन मीटर तो डेफिनेटली यूनिट है, वो तो ऐसा यूनिट है. केजीएफ सेंटीमीटर को देखें. केजीएफ इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. दैट मीन्स ये भी तो F into D तो है, फोर्स into डिस्टेंस तो है. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. हेंस दिस इज नॉट आवर आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. ग्राम फोर्स, मीटर. ग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. एंड ये भी हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो a possible unit of moment of force. So this cannot be the answer.
लेकिन लास्ट वाले को देखता हूं तो kgf is the unit of force and gram is the unit of mass. So it is force into mass, and force into mass is not moment of force. Force into perpendicular distance is moment of force. Hence, the last option is not a unit of moment of force. So this is our answer. Easy. Moving to the fourth question now. If required, you can pause the screen and you can write down the question and the option and then proceed further. Okay, now you see this figure. In the following figure, the body is pivoted at point O. You see there's a body, this irregular body. This body is pivoted at which point? It is pivoted at this point O. You can see this point is O. Okay, understand the figure very nicely. And a force F acts on the body as depicted. You can see there is a force F acts on this body as it is depicted through this line. Okay, this is the direction of force F acting on the body, and the force is acting on the body at point Q. You can see from the figure Q per act ho raha hai. Now you see the angles being told ki O is our fulcrum, or you can say pivot. Pivot se this force का direction जो हमारा MP, this is the line of force, उसके बीच का perpendicular distance कितना है? OP. कैसे पता चला ये perpendicular distance है? Because the angle here is 90 degree. You see this distance OQ को देखो, OQ is also the distance between pivot O and the point of force. लेकिन this is not the perpendicular distance. Perpendicular distance means the line of action of force and the pivot point के बीच 90 degree होना चाहिए. So हमारे पास force और pivot point के बीच में 3 distances दिए हुए हैं question में. One is OP, one is OQ and one is OM. OM भी force जहां से लग रहा है उस point से O तक का distance है, लेकिन वो perpendicular distance नहीं है. So we know what is which distance OP, OQ or OM affects the turning effect of the body. हम जानते हैं turning effect of the body, अभी मैंने formula भी बताया था, is equal to F into D, means moment of force is equal to F into D. D is which distance? Perpendicular distance between the line of action of force and the pivot. Means we have to select the perpendicular distance, which is nothing but OP over here. तो हमारा जो आंसर है वो OP होगा. So नीचे हमारा ऑप्शन है, if I go below you can see OP is the correct option. ठीक है? And no other distance. Moving further, to produce a couple, which of the following conditions is not correct? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए you should know what is the meaning of couple. So couple का जो definition है ये बहुत important है. Previous years boards में भी direct question आया है, define couple. Couple में basically तुम्हें 3-4 बातें याद रखनी है. क्या? Couple हमेशा 2 forces से produce होता है. You know, couple जैसे husband wife couple है, 2 इंसान चाहिए couple बनने के लिए. For forces में भी couple of forces produce होने के लिए 2 forces चाहिए. So 2 forces are required. The first thing. The second thing, the both of the forces should be equal. तो मैं लिखते जा रहा हूं क्या क्या मैं बोल रहा हूं. 2 forces are required, 2 equal forces are required. ठीक है, ये first point है. 2 forces, both the forces should be equal in magnitude. Second point is that both of the forces should act in opposite direction. Must act in opposite direction. एक ऊपर तो एक नीचे act होना चाहिए. जैसे मान लो कि एक rod है, ये rod है, and one of the forces is acting ऊपर, F1 is acting ऊपर, and say F2 is acting towards the downward direction, but both have the same magnitude. Okay, if F1 is 5 Newton, F2 must also be 5 Newton, because I have told you that these forces should be equal, but they should be in opposite directions. ऊपर एक तो दूसरा नीचे. Third point, they should be parallel to each other. They should definitely be parallel. If you see, this line and this line are parallel. ये दोनों lines parallel है. मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है, suppose this is the rod, and if you act F1 here, F1 is acting like this, and F2 is acting like this, and मान लेते हैं कि F1 का value 5 Newton है, F2 का value भी 5 Newton है, both of the forces have equal magnitude, but
Do they form a couple? No, because these lines are not parallel. They will intersect at a point. यहाँ जाके वो intersect कर रहे हैं. So this is not couple. So couple होने के लिए they must be parallel to each other. And of course, when they act in opposite directions, obviously they automatically become parallel also. ये बात हो गई. Third, जो fourth जो point है couple होने के लिए वो है both of the forces must not act in the same line. Not act in the same line. What does it mean? Suppose there is a body, suppose there is a rod, and one of the forces is acting upwards, upar act ho raha hai, but in the same line there is another force acting downwards. Both of the forces have same magnitude, say 5 Newton upar, 5 Newton niche. So yes, there exists two forces, there exists two equal forces, two forces acting in opposite direction also, but they are not acting in the same, they are not acting in different lines, they are rather acting on the same line. ये जो मैंने green line इसके ऊपर draw किया, एक ही single line में ये दोनों forces act हो रहे हैं. Hence this is not couple. तो couple तब होगा when they will not act in the same line. This is a necessary condition. ये चार conditions अगर होते हैं तो तुम्हारा couple बन रहा है. तो couple of forces से ही body rotate करेगा. You see this body will rotate only when a couple is formed. So you see, which we have to select that condition which is not correct in regard to a couple. So two equal forces are required. Yes, it is correct. So this is not our answer. The forces must be parallel. Yes, this is also correct. So this cannot be an answer. The forces must be in the same direction. Yes, this is our answer, because no, the forces should not be in the same direction, they must be in the opposite direction. So ये हमारा answer है. Option 4th को भी पढ़ लेते हैं. One very important thing I want to tell you, always read all the points, all the options. Even if you have got your answer, तुम्हें पता है कि option 3 ही correct है. This is our answer. Still you should read the last option or the other options, because ऐसा कई बार होता है कि any other option is also correct and there may be another option given both A and C ऐसा दिया हुआ है, तो तुम्हें both A and C को टिक करना है, क्योंकि हो सकता है दो options correct हो. इसीलिए हमेशा सभी options को पढ़ना चाहिए. The fourth option is the forces must not act along the same line. ये बात तो बिल्कुल सही है. They actually should not act along the same line. So this is not our answer. Okay, now I will move to the next question. A spanner has a long handle. Spanner का मतलब क्या होता है? इस तरह का wrench जिसको बोलते हैं ना, नट को ओपन करते हैं. देखोगे the people, the मिस्त्री लोग जो होते हैं भैया, मिस्त्री भैया, they have this spanner, and even we also have it in our homes sometimes. So this is a very essential tool. So spanner has a long handle. Why? Because it looks attractive with long handles. No, this can never be the answer. Okay, why? We know, we should know the reason. It's very easy to understand. देखोगे कि बहुत कम force लगाने से भी हम बहुत ज्यादा amount of moment of force को produce कर सकते हैं. Listen very carefully. If you apply a small force, you can produce a good amount of turning effect. So that is the reason. A small force can produce a large turning effect. So the first option is of course wrong. Let us read the second option. So the second and third is very confusing. You have to be very, very careful in selecting the correct option. What is the second point telling? A large force can be produced with a small turning effect. Can you produce a large force? No. Large force is not produced. Rather, a large turning effect is produced with a small force. So a small force can produce a large turning effect or large moment of force. This is the correct option. Small force is able to produce a large moment of force. So this is the correct option. Okay, so it's clear. You should read each and every option very carefully. You will realize that second and third options are quite confusing, but then it is, if you read it very carefully, you will easily understand that why second option is wrong and third option is only correct. Now moving to the next question. A brick is kept on a table. Therefore, the diagram is like this. You have a table top and there is a brick kept. Obviously, the brick is in the state of rest. The brick is not moving, but it is in the state of which equilibrium? Static equilibrium. Because what is static equilibrium? It is that
equilibrium when it is that condition when a number of forces are acting on the body and the body is in the state of rest. एक बॉडी में कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसके बावजूद भी बॉडी रेस्ट में है, ऐसी स्थिति है, so हम कहेंगे कि body is in the state of static equilibrium. You see this brick which is kept on the table, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, the earth is trying to pull the brick towards itself, gravity लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है. इसी brick पर normal reaction force of the table लग रहा है, the table इस पर रखा हुआ है, the table is applying normal reaction force जिसको N या R भी बोलते हैं, normal reaction force on the brick, brick पे लगा रहा है. तो एक तो तुम्हारा ग्रेविटी हो गया which is the weight of the body, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दो फोर्सेस तो लग रहे हैं. उसके बाद इसके ऊपर एयर भी है, एयर का जो वेट है वो भी इस ब्रिक के ऊपर लग रहा है, फिर फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे टेबल टॉप के ऊपर वो रखा हुआ है, तो देयर इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन विद द टेबल, द ब्रिक, द फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट. तो काफी सारे फोर्सेस इस ब्रिक पे लग रहे हैं लेकिन ब्रिक अपना रेस्ट में बैठा हुआ है. सो दिस इज अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन. पहले तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जब भी न्यूमेरिकल्स आता है ना, गिवन को लिखना चाहिए. हमारा गिवन में क्या है, फोर्स इज गिवन, 2 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ फोर्स produced due to this 2 Newton about a point P is 5 Newton meter. तो हमारा moment of force भी दिया हुआ है, moment of force 5 Newton meter है. यूनिट देखकर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. Newton is the unit of force, so 2 Newton is force, and Newton meter is the unit of moment of force, so 5 Newton meter is moment of force. Calculate the distance of the point of application of the force and the point P, means I have to calculate that perpendicular distance. Very easy. हम जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर, फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन, डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा 5/2 which is 2.5 meter. So option 2, the second option is the correct answer. Now moving to the next question. You see there is a diagram. Read the question. In the following diagram, A, B, and C are the 3 forces, each of magnitude 3 Newton. So A also has a magnitude of 3 Newton. Force B is also of 3 Newton. Force C is also 3 Newton. So each of 3 Newtons acting in a particular plane. एक plane में act हो रहा है. The point O also lies on the same plane, but you see the distance, the perpendicular distance of each of these forces from point O. So O से point A का perpendicular distance देखो 1 centimeter, B का कितना distance है O से 2 centimeter, and C force का कितना distance है O से 3 centimeter, and these are perpendicular distances. देखो यहाँ 90 degree show किया गया है. So undoubtedly these are the perpendicular distances. So which of the forces has the least perpendicular distance? A has the least perpendicular distance from O, means A is closest among all these 3 forces from point O. तो वही क्वेश्चन पूछा है, which force has the least moment. Moment means moment of force about O. तो moment of force का फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो force into perpendicular distance है. तो perpendicular distance जब कम है, moment of force भी कम है. तो least moment of force उस force के द्वारा होगा जिसका distance भी least होगा. किसका distance least है? Force A. So the answer to this question is force A. Okay, moving to the next question. So you have to select this first option, force A. Next question. In the figure of question 9, means they're talking about this figure itself. Look at the figure carefully. Okay, I will again bring the figure up. So in the figure of question 9, which type of moment is produced by the forces? कौन सा moment produce हुआ है? Anti-clockwise moment या clockwise moment या दोनों का mixture है? And overall क्या है? सब चीज यहाँ पे तुम्हें figure देखना है. It's very easy. If you look at force A, it is trying to rotate the body in this direction, है ना? तो clockwise rotate करने की कोशिश कर रहा है. A का क्या है? Clockwise घुमा रहा है. B को भी देखो, B भी clockwise घुमाने की कोशिश कर रहा है.
and C को भी देखो, C is also trying to rotate clockwise. So all of these three forces are actually producing clockwise moments. So you have to select which option. All the three forces produce clockwise moment. The first option is the correct answer. Okay, if you read all the options, you will find the other options are wrong. Let me read all the options. All the forces have produce anti-clockwise moment. Najina, this is wrong. Only A and B produce clockwise moment, but C produces anti-clockwise moment. No, all three produces clockwise moment. Only A and B produce anti-clockwise moment, but C produces clockwise moment. No. So here, this is the first option is the correct one. Now look at this figure. Calculate the moment of couple produced about point O in the following figure. You have to find out moment of couple. Moment of couple का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो. Moment of couple का फॉर्मूला होता है either force, देखो बुक में लिखा हुआ है, either force into the perpendicular distance, but the distance between what? Perpendicular distance between the two forces. सुनो ध्यान से दुनिया वालों, between the two forces, दोनों forces के बीच का perpendicular distance, यहाँ pivot से distance नहीं. When I say moment of couple, the distance is the distance between the two forces. तो यहाँ पे तुम्हारे दो forces लग रहे हैं, 20 न्यूटन 20 न्यूटन. ऑब्वियसली कपल ही है क्योंकि इक्वल फोर्सेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अभी मैंने बताया था कपल क्या होता है. सो दिस इज कपल, एंड कपल में मुझे मोमेंट ऑफ कपल निकालना है. फॉर्मूला क्या है? आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, तो कोई भी फोर्स ले लो, दोनों में से दोनों का वैल्यू सेम है 20. सो आइदर फोर्स इज 20 न्यूटन एंड द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. पिवट नहीं, पिवट से अगर डिस्टेंस होता तो वो तो 3 मीटर होता, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है 6 मीटर और O अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट O है तो वो 3 मीटर होता. बट नो, वी हैव टू टेक द कंप्लीट डिस्टेंस 6. तो हमें 20 न्यूटन इंटू 6 मीटर 120 न्यूटन मीटर. लेकिन यू हैव टू ऑप्शंस, 120 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 120 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज. किसको सिलेक्ट करें? सोच के बोलो तो. these two forces, this force and this force, will try to rotate the body in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. It's very easy to imagine. A small child can also tell कि body को ये ऐसे घुमाने की कोशिश करें. Arrows को देखो समझ जाओगे ऐसे. That means this body is rotating, or it will rotate in anti-clockwise direction, है ना? Clock के उल्टा anti-clockwise direction. तो हमारा ऑप्शन C, थर्ड वाला ऑप्शन, एंटी-क्लॉकवाइज, द सेकेंड वाला ऑप्शन 120 न्यूटन मीटर एंटी-क्लॉकवाइज, हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. इजी है, बस विजुअलाइज करना है और बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं इसको. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो, मजा आ रहा है ना? तो इस तरह से बनाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर भी हो पाएंगे एग्जाम्स के लिए. ओके, नाउ coming to question 12, calculate the moment of force of 10 न्यूटन. फोर्स दिया हुआ है, उसका हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. सो फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया हुआ है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O, which is at a distance, कितने डिस्टेंस पर है O? 0.5 मीटर फ्रॉम द फोर्स. तो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर. In the question, they have not mentioned the word perpendicular distance, but obviously when distance word is there, it is assumed that the distance provided by them is perpendicular distance only, nothing else. So हमें F और D दिया हुआ है, तो कौन हमें रोक सकता है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने से? कोई नहीं. मोमेंट ऑफ फोर्स इज F into D, 10 into 0.5 न्यूटन मीटर, which is 5 न्यूटन मीटर. So option A, the first option, is correct. Next question is very interesting, and you all will find it interesting. देखो, यूं तो मशीन्स चैप्टर से लीवर हटा दिया है, लेकिन मोमेंट ऑफ जो तुम्हारा चैप्टर है, मोमेंट ऑफ फोर्सेस वगैरह जो पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म, मीटर, रॉड, तो हियर यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीवर. तो इनडायरेक्टली लीवर हटाया नहीं है, लेकिन मशीन्स चैप्टर से लीवर को रिमूव कर दिया गया है
in the reduced portion. Anyway, look at this question. In the following figure, the weight of the uniform meter rule is 3 Newton. ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है, एक एक वर्ड को ध्यान दो. यूनिफॉर्म मीटर रूल, इसका वेट कितना है? 3 न्यूटन. वेट कितना है? 3 न्यूटन. द यूनिफॉर्म मीटर रूल हैज अ कंप्लीट लेंथ ऑफ 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम मीटर रूल है. तो ये 1 मीटर का रूल है, यानी ये 100 सेंटीमीटर का रूल है. यानी दिस पॉइंट इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी एट 100 सेंटीमीटर अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज बीइंग सस्पेंडेड. नाउ इट बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, ये पूरी अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है ऑन अ नाइफ एज. नाइफ एज कहां पे है? एट मार्क एक्स. तो फिगर में देखो, एक्स मार्क पे एक नाइफ एज है. नाइफ एज मींस वो फलक्रम है, वहां पर फलक्रम दिया गया है और वो बैलेंस है, परफेक्टली स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. When a weight of 2 Newton is suspended at 100 सेंटीमीटर मार्क, जब हमने 100 सेंटीमीटर मार्क पर एक 2 न्यूटन फोर्स को सस्पेंड कर दिया गया है. तो ये फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि 100 सेंटीमीटर मार्क पे मैंने एक 2 न्यूटन फोर्स को सस्पेंड किया हुआ है, और ऐसी स्थिति में ये पूरा बैलेंस भी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें इस फिगर में अपने से इंटेलिजेंटली ऐड करना है. द मोमेंट यू रीड द वेट ऑफ द यूनिफॉर्म मीटर रूल इज 3 न्यूटन, किसी भी यूनिफॉर्म मीटर रूल का वेट किस पॉइंट में कंसंट्रेटेड होता है? एट इट्स मिड पॉइंट. याद रखना, इस यूनिफॉर्म रूल का मिड पॉइंट कहां पे है? 50 सेंटीमीटर पे. पूरा 100 सेंटीमीटर का है, उसका आधा 50 में इट इज द मिड पॉइंट, एंड इट इज एट दिस पॉइंट द वेट ऑफ द रूल इज एक्टिंग. तुम इस पूरे रूल का वेट को मेजर कर सकते हो उसके मिड पॉइंट पर वेट करके. तो 50 सेंटीमीटर पर ही इसका ये जो वेट है 3 न्यूटन, इट इज एक्टिंग. सो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट फिगर. दिस वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैड टू ऐड इट इंटेलिजेंटली. अब हमें ये x को निकालना है. व्हाट इज द मार्क x? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे. सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तुम लोग जानते हो, वेरी इजी. तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है. सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पहले निकाल लेते हैं. तो ये लिखना रफ में, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है which is equal to clockwise moment. This is what principle of equilibrium tells. Anti-clockwise moment कितना? 3 न्यूटन into ये डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस है ये? x minus 50. x minus 50, ये x मुझे निकालना है. ये x एक मार्क है, वो मार्क का क्या वैल्यू है? एंड क्लॉकवाइज मोमेंट कितना? 2 न्यूटन, क्योंकि f into d, फोर्स into डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स हमारा 2 न्यूटन है, और ये डिस्टेंस कितना है? 100 minus x. इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वेरी सिंपल. 3x minus 150 is equal to 200 minus 2x. सॉल्व करो तो 3x minus 3 यहां पे हो जाएगा हमारा 3x plus 2x is equal to 350. So 5x is equal to 350. x is equal to 70. यानी ये x कुछ नहीं है लेकिन 70 सेंटीमीटर है. This is your answer. 70 centimeter is the correct option. कितना easy question है. And such types of intelligent questions will be coming in your first semester exams. और भी ऐसे काफी सारे questions हैं. चलो, moving to the next question now. So here is the next question. Calculate the weight of the uniform meter rule in the following figure. If this meter rule can be balanced at 60 centimeter mark when a weight of 5 Newton is suspended at 100 centimeter mark. So first of all, this is a uniform meter rule, means 1 meter uniform rule hai. 1 meter means 100 centimeter. And this can be balanced. Balanced का मतलब ये perfectly horizontal balanced है. किस मार्क पे? 60 सेंटीमीटर मार्क पे. It means that the fulcrum, the knife edge, whatever you may call it, is at 60 centimeter. It is very clear from the figure also. When a weight of 5 Newton is suspended at 100 centimeter mark, जब हमने 5 Newton का फोर्स 100 सेंटीमीटर मार्क में सस्पेंड किया, तब ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो रहा है. आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रूल. व्हाट इज द वेट ऑफ दिस मीटर रूल? आई जस्ट टोल्ड यू दैट द वेट ऑफ अ मीटर रूल इज ऑलवेज concentrated at the midpoint of this
rule. So midpoint is 50, right? ये पूरा 100 है, तो 50 सेंटीमीटर जो इसका midpoint है, वहां पर इसका weight है. And we have to calculate that weight. So let that weight be W. We have to calculate this W. Using the principle of moments in equilibrium, which says sum of anti-clockwise moments is equal to sum of clockwise moments. So what is sum of anti-clockwise moments? So the force is W into the distance is this distance. So 60 minus 50, which is 10. And over that side, the sum of clockwise moments. Clockwise moment kya hoga? What is the force? 5. What is this distance? 100 minus 60. 100 minus 60. This is the distance. So 40. When you solve this, so you will have weight is 20 Newton. So this option C is correct over here. Moving to the next question. A piece of stone tied at the end of a thread. तुमने एक thread लिया, एक stone लिया, and you're whirling it, घुमा रहे हो ऐसे, is whirled in a horizontal circle with a uniform speed. Okay, uniform speed means constant speed. तुम इसे घुमा रहे हो constant speed में, means it is moving in a circular path. It is actually a circular motion. The stone is exhibiting circular motion. And it is moving with a constant speed. क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है uniform speed. Uniform का मतलब ही होता है constant. So constant speed. तो speed तो constant है. लेकिन क्या उसका velocity भी constant है? No. Velocity depends on direction also. So velocity में जो magnitude है, that is constant. But the direction is not constant because at every point of time, the direction is changing. You see? At every point of time, the direction is changing. So velocity is variable, means velocity is changing. So which option will be correct? Let us read all the options. First option says only velocity is constant. Speed is variable. Not at all. This is wrong. Only speed is constant. Velocity is variable. Yes, this is correct. Speed is only constant. Velocity is changing because direction is also changing at every point. So velocity is variable, velocity is changing. So this is the correct answer. Let us read the other options as well. Both speed and velocity are constant. No. Both speed and velocity are variable. No. Okay, so very simple. Next. Question 16. Which of the following statements is correct about uniform linear motion? We have to know what is uniform linear motion. When a body moves in a straight line path में वो move कर रहा है, just like this, straight line path with constant speed. Constant speed means uniform speed. That is why the word is there, uniform motion. Uniform linear motion means a constant speed से वो move कर रहा है, linear मतलब एक straight line में move कर रहा है. So if you see, it has a constant speed, but also its velocity is constant because it is moving in one particular direction. इसका direction तो change नहीं हो रहा है, unlike the previous case. In this case, the body is moving in one constant direction, and hence it will also have constant velocity. So which option is correct? Both the speed and velocity are constant. दोनों constant है uniform linear motion में. इसके आगे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, that was uniform circular motion, and in that case only speed is constant, velocity is not constant. But in uniform linear motion, both speed and velocity are constant. Very important concept. Moving to the next question, question 17. Which of the following statements is not correct about centripetal force? Centripetal force के बारे में ये इनमें से कौन सा statements not correct है, मतलब गलत है, which is a wrong statement. So it is a real force. Of course, centripetal force is real force because centrifugal force is a false force or a fictitious force. So this is not the answer. It acts towards the center of the circular path. This is also correct. Centripetal force acts towards the center of the circular path. Centrifugal force appears to act away from the center of the circular path. Centripetal force is required for circular motion. This is also correct. So let us read the last point. It is a force of reaction of centrifugal force.
No. Centripetal force and centrifugal force, they are not the forces of reaction of each other because they act on different bodies. So this is not true about centripetal force. Hence, this is the answer. Next question. In the following figure, a uniform half-meter rule of mass 200 gram is balanced on a fulcrum at mark 30 centimeter. Figure में दिख रहा है, हमने लिया है एक half-meter rule. Read it very carefully. It is not a meter rule. And it is a place where a lot of students commit mistakes. They will read it as meter rule, but the question says half meter rule. No, don't make that mistake. Half meter rule means the entire length is of 50 centimeter, आधा meter है. So it is starting from 0 centimeter and ending at 50 centimeter. And you can see very clearly it is told that the fulcrum is at a mark 30 centimeter. So fulcrum 30 centimeter पे है. We have to find the value of m. Okay, let us understand, analyze this question very intelligently and clearly. This is a long question. इसके सब parts भी है. You see what is told. 40 centimeter पर इसका एक mass m इसको suspend कर दिया गया है. So क्या लिखा हुआ है? This half meter rule of mass 200 gram. ये जो half meter rule मैंने लिया है, इसका mass कितना है? 200 ग्राम है. यानी इसका weight कितना है? 200 ग्राम फोर्स है. Once again, इसका mass 200 grams है, तो इस मीटर रूल का weight कितना होगा? Weight is force. So express this gram as a gram force. It will be 200 gram force. तो force में आ गया, weight आ गया. Now, this 200 gram force will be suspended or is concentrated at which point? You tell me. I have been telling this since a long time. पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया है कि किसी भी यूनिफॉर्म मीटर रूल है या हाफ मीटर रूल है, उसका जो वेट होता है वो उसके मिड पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. सो दिस इज अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड और अ रूल. सो उसका मिड पॉइंट 25 में होगा एंड इस मिड पॉइंट पर ही इसका जो वेट है 200 ग्राम फोर्स वो कॉन्सेंट्रेटेड है. इंटेलिजेंटली ये तुम्हें ड्रॉ करना है. तो हमारा फिगर कितना क्लियर हो गया कि हमारे पास एक 25 सेंटीमीटर पर 200 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड है, which is actually producing the anti-clockwise moment, and this m mass, or you can say m gram force, is producing the clockwise moment. And it in this situation क्या लिखा हुआ है? It is balanced. इस वर्ड को देखो, balanced मतलब perfect horizontal है. So मैं यहाँ पे principle of moments in equilibrium को apply कर सकता हूँ. Just as we did in the previous questions. So sum of anti-clockwise moments is equal to sum of clockwise moments. So what is that anti-clockwise moment? Force into this distance. What is the force? 200 gram force into the distance. What is the distance? 30 minus 25. 30 minus 25 is 5 centimeter is equal to udhar clockwise moment. Clockwise moment is produced by the force m, or you can say mass m, into what is this distance? 40 minus 30. So it is 10. And you cancel these zeros and you have m as 100 grams. Since it is mass, we will express it in terms of gram. Had it been weight, कोई अगर मुझे बोलता weight कितना है, m का weight कितना है, तो मैं बोलता 100 gram force. weight बोलेगा तो मैं gram force के terms में बोलूंगा. mass बोला है grams में बोलूंगा. So mass is 100 grams. So this is the answer. Find what is the value of m. तो हमने अभी निकाल लिया. m is 100 gram. This first option. Moving to the next question. अब देखो, next question is also related to this figure only. ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ. m हमारा निकल गया है. Next question में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देखो, to which side will the rule tilt? किस साइड ये रूल टिल्ट हो जाएगा? अभी टिल्टेड नहीं है, अभी तो पूरा हॉरिजॉन्टल है. क्वेश्चन में बोल दिया है, इसीलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई किया, बिकॉज द रूल वाज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड द क्वेश्चन मेंशन्ड इट. यहां लिखा हुआ था, यू सी दिस वर्ड, द रूल इज बैलेंस्ड. बैलेंस्ड मींस इट इज परफेक्टली horizontal and it is not tilted. But now the question says that the rule will tilt on which side?
if what? The mass is moved. Mass means mass m. Okay, if the mass m is moved to mark 35 centimeter. So अभी मैं इसको 35 सेंटीमीटर पे लेके चला जाऊंगा, तो फिर वो किधर टिल्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑन द साइड ऑफ मास एम, जिस साइड में मास एम है उधर टिल्ट हो जाएगा. ऑन द साइड ऑपोजिट टू मास एम, ऑपोजिट साइड ऑफ मास एम के इधर टिल्ट हो जाएगा, ऑपोजिट साइड. विल नॉट टिल्ट एट ऑल, टिल्ट ही नहीं होगा, अभी भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. क्या ये करेक्ट है? या कैन नॉट बी सेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. आप बोल ही नहीं सकते, आपने जितना इंफॉर्मेशन दिया है उससे आप बोल ही नहीं सकते. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो लेट मी रीड्रॉ द फिगर. इफ यू सी द फिगर वंस अगेन, द मास m is originally at 40 centimeter, and this is when the ruler is perfectly balanced. But now I will shift this mass m from 40 to 35. 40 इधर है, अब मैं उसको 35 थोड़ा सा लेफ्टवर्ड्स, मतलब इधर शिफ्ट कर दूंगा, 35 पे शिफ्ट कर दूंगा, 40 पे नहीं. सो नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड व्हाट विल बी द क्लॉकवाइज मोमेंट, वो मुझे कैलकुलेट करना है. लेट मी रीड्रॉ द फिगर. सो आई एम रीड्रॉइंग इट. दिस इज द रूल एंड द फल्क्रम as said in the question is at 30 centimeter. यहां पे हमारा 25 सेंटीमीटर है, ये 0 है, ये तुम्हारा 50 है, एंड 25 पे इसका मास है. मास गिवन है. व्हाट इज द मास गिवन? 200 ग्राम फोर्स. इट इज गिवन. Now I have shifted this mass m to 35. So 35 पर मैंने ये mass m को shift कर दिया. The figure is this. You see, at 35 this mass m is being suspended. इस mass m का value भी मैंने निकाल लिया है. 100 gram force मैं लिख रहा हूँ because I'm expressing it as the weight. Okay, मैं यहाँ 100 ग्राम भी लिखूंगा तो चलेगा, but more technically ग्राम फोर्स लिखना करेक्ट है क्योंकि मैं यहाँ वेट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ. दोनों साइड वेट है, इधर 200 ग्राम फोर्स है और इधर 100 ग्राम फोर्स है. Okay, now we will calculate the anti-clockwise moment first, which force is producing the anti-clockwise moment? 200 gram force. वो इधर anti-clockwise घुमाने की कोशिश कर रहा है. So 200 gram force into which distance is it? 5, जो हमने already निकाला था. So this is your anti-clockwise moment. कितना है? 5 2s are 10. So 1000 gram force centimeter. Now we will calculate the clockwise moment. Clockwise moment. Clockwise moment, which force is responsible? This 100 gram force. So force into distance. What is this distance? 35 minus 30 is again 5. So this is 500 gram force centimeter. So you see the anti-clockwise moment is more than the clockwise moment. The clockwise moment is only 500 gram force centimeter, whereas the anti-clockwise moment is 1000 gram force centimeter. So obviously anti-clockwise moment will dominate because that's more. So वो anti-clockwise की तरफ घूम जाएगा. Anti-clockwise तरफ वो घूम जाएगा. Means it will bend like this. This 200 gram force will dominate over the 100 gram force because 200 gram, you can see anti-clockwise moment is more. 1000 gram force centimeter बना है. So ये m जिधर है उसके opposite side में tilt होगा. m जिधर है, m के साइड में तो टिल्ट हुआ नहीं, m के ऑपोजिट साइड में टिल्ट हुआ. सो द आंसर विल बी इट विल टिल्ट ऑन द साइड ऑपोजिट टू मास m. Isn't this question very interesting? And it is very conceptual. Okay, so let us move to the next question now. What is the resultant moment now? अभी इस स्थिति में रिजल्टेंट मोमेंट क्या है? सो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था, हमने अभी भी कैलकुलेट किया था 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और हमने अभी भी कैलकुलेट किया था कि इस स्थिति में क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट? वी सिंपली डू द algebraic एडिशन बट विथ साइन कन्वेंशन. तो रिजल्टेंट मोमेंट जब भी बोलेगा यू हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लेते हैं. अगेन साइन कन्वेंशन क्या बोलता है?
anti-clockwise moments are always taken positive, clockwise moments are always taken negative. तो हम इसको 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर को हम पॉजिटिव ही रखेंगे प्लस, एंड हमारा जो 500 ग्राम पर सेंटीमीटर है उसको नेगेटिव कर देंगे, -500 ग्राम पर सेंटीमीटर, एंड सिंपली दोनों को ऐड करेंगे विद साइन. दैट मींस हमारा जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो क्या है, हमारा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव, एंड देन प्लस हमारा क्लॉकवाइज विच इज -500 ग्राम पर सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे. 1000 - 500 इज 500 ग्राम पर सेंटीमीटर. यू सी द साइन इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव. 500 के पहले देयर इज नो साइन, मींस देयर इज पॉजिटिव साइन. अगर नेगेटिव आता तो हम उसे कहते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज द साइन ओवर हियर इज नेगेटिव, is positive. When the sign is positive, it means it is anti-clockwise moment. 500 ग्राम फोर्स anti-clockwise moment. तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 500 ग्राम फोर्स anti-clockwise moment. You see there is an option 500 ग्राम फोर्स clockwise moment. This is not correct. So हमारा ऑप्शन B is correct. तो ये चीज बहुत सिंपल है. रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए सिंपल एल्जेब्रिक सम करो साइन के साथ. एंटी क्लॉकवाइज का साइन प्लस होता है, क्लॉकवाइज का साइन माइनस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following figure, the uniform meter rule balances horizontal. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया है कि ये बैलेंस्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम के स्टेट में है. इन दिस क्वेश्चन वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. अब क्या बोल रहा है? इट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली एट पॉइंट P. P पर बैलेंस्ड है. P किस मार्क पे है? एट 60 सेंटीमीटर मार्क. हमारे फिगर में भी दिख रहा है P is at 60 centimeter mark. Now there are three forces. You see 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton act vertically downwards. You can see in the figure 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton. These three forces, they are acting vertically downwards at which marks? 10 centimeters. So 20 Newton is acting at 10 centimeter, 30 Newton is acting at 20 centimeter and 90 centimeter respectively. Means 40 Newton is acting at 90 centimeter respectively. And this is also given in the question, the diagram. This is also drawn in the diagram. Okay, now calculate the resultant moment of force about point P. तो मैंने अभी भी बताया था कि resultant moment निकालने का वही मेथड है, ट्रिक है कि आप एंटी क्लॉकवाइज टोटल निकालो, आप क्लॉकवाइज कितना है निकालो, एंड साइन के साथ आप दोनों को ऐड कर दो, साइन के साथ. So first of all, I will find out the anti-clockwise moments. Anti-clockwise moments. So anti-clockwise moments means those forces which are trying to rotate this rod anti-clockwise direction, and this 20 Newton and this 30 Newton is trying to rotate it in the anti-clockwise direction, whereas this 40 Newton is trying to rotate it in clockwise direction. तो हमारा जब हम anti-clockwise moment निकालेंगे, we will only consider 20 Newton force and 30 Newton force because these are the two forces which are producing the anti-clockwise moments. तो सबसे पहले हम इस 30 Newton का निकालते हैं. So 30 force हो गया 30 into the distance. What is this distance? 60 minus 20. So this is 40. So this 30 into 40 Newton centimeter, क्योंकि यूनिट हमारा यहाँ न्यूटन है और यहाँ सेंटीमीटर है, so न्यूटन सेंटीमीटर यूनिट होगा इधर. So 30 into 40 Newton centimeter is the anti-clockwise moment produced due to this 30 Newton force. लेकिन साथ साथ 20 Newton भी anti-clockwise moment produce कर रहा है. तो अब हम इस 20 Newton का निकालेंगे. So plus 20 Newton into what is this distance? Always the distance is taken from fulcrum. याद रखना. Distance जो हम लेते हैं ना, perpendicular distance from pivot to point of action of force. तो ये distance कितना है? 60 minus 10. So that's 50. तो इसको add कर लो. 4 3s are 12. So 1200 plus 5 2s are 10. So this is 1000. So this is 2200 Newton centimeter. This is your anti-clockwise moment. Now what is the clockwise moment? Clockwise moment. So this force, only this 40 Newton is responsible for the clockwise moment. So 40 Newton into what's this distance? 90 minus 60. देख लो, 90 minus 60. So 30. So 40 into 30 Newton centimeter. So for 3s are 1200 Newton centimeter.
अब मैंने बताया था क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, सो यू टेक दिस माइनस साइन ओवर हियर, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, क्यों, तो माइनस हो गया। या फिर जब हम इसे, ये माइंड में माइनस रखो, इसको कीप दिस माइनस साइन इन योर माइंड, ओके, बिकॉज व्हेन वी विल फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट जो मुझे निकालना है, वहां मैं एल्जेब्रिकली ऐड करूंगा, तो 2200 तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो प्लस होगा, सो प्लस 2200, उसके साथ किसको ऐड करेंगे, ये 1200 को विद द नेगेटिव साइन, because it is clockwise. So basically it is 22,000 minus 12, 2200 minus 1200. So this is 1000. Sign क्या आएगा? Positive आएगा, plus 1000 Newton centimeter. And when the sign is plus, automatically it has come plus. So ये जो plus आया इसका sign, we can say that this is anti-clockwise moment. So we can say that 1000 Newton centimeter anti-clockwise moment is over here. Okay. Now we move to the next question. Where does the center of gravity lie on a triangular lamina? This is a direct question from the book. You have to memorize, you have to mug up the center of gravities for all the regular objects given in your book. So triangular lamina ka, we know that it is at the point of intersection of medians. ये तुम्हें याद रखना है, direct question. Next question. Now, if you see your ICSE specimen paper, you will have these types of questions where you have to identify the correct sequence of steps. They will give you certain steps, okay, and then they will tell you what's the correct sequence of steps. इस तरह के questions तुम्हारे specimen पेपर में जो आईसीएसई ने रिलीज किया उसमें है, वेरी इजी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एंड दीज आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस. A nut is opened by a wrench of length 20 centimeters. So the perpendicular distance basically is given. The length of the wrench is the perpendicular distance. So that is given 20 centimeters. The least force required is 10 Newton. So the least force is given 10 Newton. Write the steps to calculate moment of force. So what I have to calculate? Moment of force. So the steps to calculate moment of force needed to turn the nut are shown below. So there are some steps given. Some of the steps are correct. Some of the steps are wrong also. So you have to identify the correct sequence of steps to calculate moment of force. So whenever such a question comes, you first solve it as you would solve it normally. So forget about the steps given, you solve normally. So moment of force के लिए हम क्या करते हैं? Force into distance करते हैं. Force कितना है? 10 है. Distance कितना है? 20 है. And it will be 200 Newton centimeter. But if you see the options over here has Newton meter given. That means they have converted this centimeter into meter. So we will also do that. So when we convert this into this centimeter into meter, it will be 0.2 meters. And hence I will be putting over here 0.2 meters. And hence our answer will be 2 Newton meter. 2 Newton meter. So if you see which step did you arrive at first, if you see 10 into 0.2 तुमने किया moment of force करने के लिए. So moment of force is 10 into 0.2, or you can say 0.2 into 10. So the step 1 given over here is actually the step that we arrived at first, and then इसको solve करके हमारा 2 Newton meter आया. So that means 1 and then 5. We never arrived at this step. This is a wrong step. We never arrived at 20 upon 10 also. This is a wrong step. And our answer was not 200 Newton meter. This was a wrong answer. So these 2, 3, and 4 options which are given as steps are incorrect. So 1 and 5 are correct. And first we arrived at this 1 and then 5. So 1 and then 5 is our correct option. This one. This is correct. First 1 and then 5. Okay, so this is very easy, such types of questions, and I hope you all will be doing very good in your physics exam. You will all get full marks because the questions are very, very simple. Question 22. In which of the following bodies the center of gravity lies outside the material of the body? So, you know, we have learned about center of gravity. You must have learned it, that center of gravity does not necessarily lie within the material of the body. When you have a ring, you see, when you have a ring, and this question came many times in boards. Ring means I'm talking about
a ring-like object like anguthi. Okay, so when you have a ring, this kind of ring, like which is worn in the finger, so the center of gravity lies somewhere in this region, this point, at point P, which I have shown. This point P lies in the air. There is no material, isn't it? So it is definitely possible that center of gravity can lie outside the material of the body. Similarly, if you have a hollow pipe, I'm not talking about a solid cylinder, I'm talking about a hollow pipe. Andar mein hawa bhara hua hai, pipe. So this is the point where the center of gravity will lie. Okay, the midpoint on the axis of this pipe, of this hollow cylinder. You can call it a hollow cylinder. So uska jo axis hai, uske midpoint par. Now this point, at this point, there is no material. There is air, isn't it? There is air. So hollow region में उसका center of gravity है. तो ऐसा hollow sphere में भी हो सकता है. कोई भी hollow bodies जो होते हैं, generally उसमें होते हैं. So in which body it will be like this? So the first option is circular body like a coin. It is a circular disc they are talking about. But no, in a circular disc, it lies in the geometric center. And that is where material of the body lies. So ये पूरा एक disc है. So this cannot be our answer. A hollow pipe, a hollow cylinder like a pipe. Yes, this is the correct option. A solid sphere? No. But had it been a hollow sphere, then that would have been also our answer. But your MCQs will have one option correct. So this is your option. But again, I'm telling you, there are certain MCQs in physics where you have to select two options, as you will find it in your specimen paper, 2 marks MCQ questions where they have two options correct, and they will have two questions also merged in one question. So those are exceptional questions where you have to select two correct options. Okay, you will find them in your specimen paper. Now, moving to the next question. Chintu took a piece of straight wire. ठीक है, उसने एक straight wire लिया. He found that the center of gravity lies at the midpoint of the length of the wire. उसने एक तार लिया और उस तार के midpoint पर उसका center of gravity lie कर रहा है. ठीक है, obviously एक तार है, यूनिफॉर्म तार अगर होगा उसको मिड पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा. नाउ नेक्स्ट ही बेंट द सेम वायर इनटू अ सर्कुलर रिंग. फिर उसने इसी तार को मोड़कर उसने एक सर्कुलर रिंग बनाया. एंड नाउ ही फाउंड आउट कि रिंग बनाने के बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर. दिस टाइम ही फाउंड दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेम वायर हैज चेंज्ड टू द सेंटर ऑफ द रिंग. तो रिंग के सेंटर में पहुंच गया है. सो वो विच फैक्ट इज रिवील्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? उसको क्या फैक्ट पता चलता है? फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. क्या इसका पता चलता है? उसको मास तो चेंज नहीं हुआ है. हैज द मास चेंज्ड? नहीं, मैंने उसका तार वही था, उसी तार को मैंने मोड़कर वायर बना दिया, तो मास तो चेंज नहीं हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया. सो मास पे डिपेंड नहीं करता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास. हेंस द फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग. लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. यस, मैंने मास चेंज नहीं किया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज कर दिया. मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था? पहले एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट वायर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड था. अभी मैंने उसको मोड़कर एक सर्कुलर वायर बना दिया, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया. दैट मींस शेप ऑफ द बॉडी हैज चेंज्ड. एंड जैसे ही उसका शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो चेंज्ड. एंड हेंस दिस इज द फैक्ट व्हिच इज रिवील्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, दैट इज द शेप ऑफ द बॉडी. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज लाई विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी. नो, आई जस्ट टोल्ड इट इज नॉट नेसेसरी. इट मे लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी. एंड नो फैक्ट इज रिलीज्ड. ये तो हो ही नहीं सकता. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वाला ऑप्शन, that it depends on the mass, on the distribution of mass of the body, shape of the body. Next question. A raindrop, and this is the last question. A raindrop reaches to the surface of the earth with a constant velocity. A constant velocity. Constant velocity का मतलब है uniform velocity, या फिर तुम बोल सकते हो a fixed velocity. उसका speed change नहीं हो रहा है, direction भी change नहीं हो रहा है, constant velocity से गिर रहा है. So the raindrop is in, हम जानते हैं कि number of forces when acting on a body, and if the body is moving with a uniform velocity, we will call that the body is in the state of dynamic equilibrium. तो जब
कई सारे फोर्सेस इस रेन ड्रॉप पे लग रहे हैं, रेन ड्रॉप गिर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर लग रहा है क्योंकि आसपास एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर इज देयर, सो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, एंड इतने सारे फोर्सेस लगने के बावजूद उसका जो वेलोसिटी है नीचे वो गिर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है. सो इट इज अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. एंड विद दिस I end this video. We have done quite a few important questions, and if you have liked this video and if you want more of such MCQs on different chapters, other chapters, then you like this video and you also email me regarding this. If I get sufficient number of emails asking me to provide more of such MCQs on the different chapters, then I will definitely come up with other chapters. My email is sunando.debnath@yahoo.com. sunando.debnath@yahoo.com. Have a nice day and all the best for your upcoming ICSE examinations. God bless everyone.